for the EU leadership and your engagement particularly. We were both actively engaged. You were very kind to remain in touch during Pakistan-India war, as well as the current conflict, US-Iran conflict. So we keep exchanging our notes, and you've been very kind. Thank you very much. Prime Minister Shahbaz Sharif also had a great opportunity to discuss with the President of the Council, Mr. Costa. When I, held with you the dialogue, I also had the opportunity to call on the President of Council. So I think this interaction is very welcome, and I'm sure President of the Commission, President Ursula, will find some time in calendar like you to visit Pakistan. There is a standing invitation from Prime Minister of Pakistan for her to visit to visit Pakistan. Excellency, we have a great relationship with EU. There's a great history. We are Pakistan sees the considerable untapped potential in our cooperation. And we have, a number of areas where we can work together, particularly, the trade and many other areas. There was a EU strategic vision, which aims at providing long-term direction and strategic cooperation toward partnership, building upon the Strategic Engagement Plan 2019 and the Cooperation Agreement 2004. The proposed vision seeks to elevate our engagement into a more comprehensive and forward-looking framework. We believe this vision document can serve as an important foundation for deepening our political understanding, expanding sectoral cooperation, and strengthening institutional linkages between Pakistan and EU. So the continuation of the strategic dialogue demonstrates our shared resolve to impart greater momentum to Pakistan-EU relations and to shape forward-looking partnership. Excellency, I look forward to a very fruitful round of discussions. We had great discussions in our restricted meetings, and now at the delegation level, I would request for your opening remarks, and then we will adopt the agenda and follow the agenda. Over to you, Excellency. Thank you. Thank you. Thank you, Deputy Prime Minister. Thank you, dear Ishaq. It's really a pleasure to be here, and you were very consistent in your invitation. Every time we spoke over the phone, you always said that you have to come to Pakistan. So finally, I said also to my team that we really need to find time. And as you know, in this calendars, there's too few days, but we found this day, and I'm happy that we are here. And also, I really want to commend you on facilitating the talks between US and Iran. It's a conflict that is having an impact on everybody in the world when it comes to the energy prices, when it comes to the prices of fertilizers. So this is really what we need to see, a ceasefire really holding, and then the talks continuing. But I think also the momentum of 2026 is to develop EU-Pakistan relations into more forward-looking footing. We have this contested geopolitical environment. I mean, we have raising tensions everywhere. We have real risk of escalation, and like we were discussing, we also share the priorities when it comes to the rules-based international order that we need to develop further. We are working towards global and regional stability, which is in both of our interests. We also promote free and fair trade and investment, and also advance sustainable connectivity. So I really welcome in this regard the strong momentum for EU-Pakistan trade relations. EU remains by far Pakistan's largest export destination, and I was surprised to hear that it's actually more than US and China combined. So we really are your market. While Pakistan continues to be world's leading beneficiary of the generalized theme
scheme of preference plus system. So this is really showing that the partnership is not only commercially significant, but it's also driver of the growth. And beyond trade and investment, there are other areas where we can explore the deepening of our ties. So when it comes to resilience building, when it comes to climate, when it comes to digital infrastructure, when it comes to migration mobility, and really these are investments in long-term partnership. And really looking forward to our discussions today about the regional but also global developments and how we can develop our relationship even further. So thank you for having us here. EU की आला नुमाइंदा कैलिस इस वक्त 8वें मुश्तरका स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात से खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान का दौरा करने पर बेहद खुशी है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। अमरीका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया तवानाई के शदीद बहरान का शिकार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। साल 2026 का असल हदफ पाकिस्तान EU ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तक़बिल पर मबनी बनाना है। आइंदा माली साल में चारों सूबों के तरक्याती प्रोग्रामों का मजमूई हजम 3138 अरब रुपए तजवीज़ दी जाएगी। सामने आने वाली दस्तावेज़ के मुताबिक पंजाब 1450 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम के साथ पहले नंबर पर है। पंजाब के तरक्याती बजट में 1306 अरब रुपए मकामी वसाइल से फराहम किए जाएंगे। पंजाब के लिए गैर मुल्की इमदाद की मद में 144 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सिंध का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 816 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश है। सिंध के तरक्याती बजट में 520 अरब रुपए मकामी वसाइल से शामिल किए गए हैं। सिंध के लिए गैर मुल्की इमदाद का हजम 296 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। पंजाब का आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट होगा। ज़राए महकमा ख़जाना पंजाब के मुताबिक आइंदा माली साल टैक्स वसूलियाँ तकरीबन 712 अरब रुपए तक रखे जाने का इम्कान है। टैक्स आमदन में सबसे बड़ा हिस्सा GST इन सर्विसेज का होगा। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे जवाद मलिक से। जवाद मलिक बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब के नए बजट के मजीद दादोशुमार जो सामने आए हैं उसके मुताबिक पंजाब का जो आइंदा माली साल का बजट होगा वो टैक्स फ्री बजट होगा और आइंदा माली साल में टैक्स वसूलियों को तकरीबन 712 अरब रुपए तक रखे जाने का इम्कान है। टैक्स आमदन में सबसे बड़ा हिस्सा GST ऑन सर्विसेज का होगा। सर्विसेज ऑन GST में जो रकम इस वक्त आमदनी मुतवक्के है वो 320 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। एक्साइज ड्यूटी में 128 अरब रुपए की आमदनी मुतवक्के है और स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से 90 अरब रुपए का हदफ हासिल होने का इम्कान है। सेल टैक्स से 82 अरब और मोटर व्हीकल टैक्स से 47 अरब रुपए की आमदनी हासिल होने का इम्कान है और बिजली से मतलब टैक्स और ड्यूटीज जो है उससे 35.2 अरब रुपए और लैंड रेवेन्यू से 1.7 अरब रुपए मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट और मुकामी हुकूमतों के लिए 550 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज़ रखी गई है। किसानों, तलबा और मजदूरों के लिए सब्सिडी प्रोग्राम जारी रखने की तजवीज़ है। इसमें किसानों के लिए ट्रैक्टर, सोलर ट्यूबवेल्स और सस्ते बीज खाद के कर्जे और सब्सिडी जो है बदस्तूर दी जाएगी और तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम भी जारी रहेगी। जनूबी पंजाब के लिए इसमें जो आखिरी बात है, जनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबों के लिए कम अज कम